Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. Today is the sixth module of the topic simple interest and compound interest. And in today's module, we will learn the concept and the questions related to installment. So first, let me share the screen with you. Installment का मोटा मोटा मतलब होता है buy now, pay later. So there is something called as EMI. EMI का मतलब क्या होता है? EMI stands for Equated Monthly Installment. It relates to payments made regularly to repay an outstanding loan with a certain time frame. As the name applies, these installments are always of the same amount. EMI है या फिर installment है, ये कैसे काम करता है? For an example, you want to purchase a mobile. तो आप एक मोबाइल की दुकान में गए and you told that person कि okay, I want to purchase a mobile of 20,000 rupees. वो जो दुकान वाला है उसने आपको बोला कि okay, why you want to purchase a mobile of 20,000 rupees? You can purchase an iPhone. So you told him कि okay, I don't have that much of money that I can purchase an iPhone. So वो दुकान वाले ने बोला कि no issue, if you don't have that much of amount, that's fine. यहाँ पर हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट का स्कीम है जिसमें आप अभी मोबाइल फोन खरीद सकते हो और धीरे धीरे उसका आप रीपेमेंट कर सकते हो. ओके, तो बेसिकली आपका जो कैपेसिटी था वो 20,000 का था, लेकिन आपको चिपका दिया एक आईफोन. ठीक है, सो दैट हाउ द इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वर्क्स. कि जैसे आपके पास घर खरीदने के पैसे नहीं तो भी आप एक घर खरीद सकते हो एंड एवरी मंथ यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें मोटा मोटा 2 से 3 4 चीजें होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ परचेज अमाउंट. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परचेज अमाउंट. अभी ये जो भी लोग आपको इंस्टॉलमेंट पे पैसे देते हैं वो फ्री में नहीं देते. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू परचेज अ फोन ऑफ रुपीज 50,000 and so purchase amount is suppose 50,000 rupees and you're told him okay, I will pay yearly 10,000 rupees. So आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज. तो क्या आपको लगता है कि आपके 5 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वुड बी 5 because 10,000 into 5 is 50,000. So क्या number of installments 5 बनेंगे? No, it will be more than 5 because if they are giving you money on installment तो they will definitely charge for it. तो उसके ऊपर एक rate of interest होता है जिसके ऊपर वो charge करते हैं. So there is something called as rate of interest. वो जो पैसे जो है वो 50,000 रुपीज आपको दे रहे, वो फ्री में नहीं दे रहे. Now here in this particular case the number of installments are 2. You need to find the installment amount. तो इस टाइप के क्वेश्चन में 4 चीजें होती है. फर्स्ट इज द परचेज अमाउंट, सेकंड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड इज द नंबर ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. जनरली इसमें ईयरली इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन नहीं बनते. एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है. जनरली सभी क्वेश्चंस में आपको आरओआई एंड नंबर ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दिया होगा. And from this purchase amount and this installment amount, any one amount would they will give it to you. You need to find the second amount. तो अगर purchase amount दिया है तो आपको installment amount निकालना है. And if they have given you the installment amount, then you need to find the purchase amount. For an example, in this particular case, purchase amount is given and you need to find the installment. ठीक है. Now इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो. एक तो है हमारे पास फॉर्मूला, हालांकि वो फॉर्मूला इज नॉट दैट इजी. So either you can apply the formula and you can get the answer. And second thing is कि इसके पीछे एक ट्रिक है, कुछ certain steps है जो आपको करने हैं और वो steps आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. Okay, so first thing is we will use the formula to get the answer. यहाँ पर formula is like this: installment is equal to, क्या है इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला? इट इज इक्वल टू a अपॉन 1 minus 100 divided by 100 plus r raised to n into r upon 100. So this formula is complicated. No? इतना easy नहीं है ये formula. Next, from here you need to find the installment amount. Now A is nothing but the purchase amount. So here the purchase amount is 21,000 rupees
1 minus 100. 100 plus R. Rate of interest is 10%. So it is 100 plus 10 का square. 21,000 divided. Now 100 divided by, sorry, this is 10. 100 divided by 110 is nothing but 10 divided by 100. And 10 का square is 100 and 11 का square is 21,000 divided by, now 121 minus 100 is 21, divide by 121 into 10 upon 100 is nothing but 1 by 10. ये 121 है, इसको हम यहाँ पर ऊपर भेज सकते हैं. So it is ये और ये कैंसिल. So this is 100. So answer is 121 और उसके पीछे 2 12,100 rupees is the installment amount. This is the answer. इसका मतलब है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है 21,000 rupees का and you have purchased this product on installment wherein you need to pay 2 yearly installment and the rate of interest is 10%. तो आपको हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 12,100 रुपए का बनेगा. So first installment is of 12,100, second installment is of 12,100. So in total you are paying 24,200 rupees. तो आपने प्रोडक्ट जो है वो कितने में खरीदा था? 21,000 rupees में you purchased the product and आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो 24,200 रुपीज का है. तो ठीक है, तो आपने 24,200 माइनस 21,000 करे तो 3,200 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किया. दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट दे हैव टेकन फ्रॉम यू. ठीक है, so this is one method wherein we have applied the formula. Now second is a trick and that is simpler. That कैसे देखो वो कैसे करेंगे. Now here in the second method we will take the ratio of purchase amount versus installment. ऐसा आप लिख सकते हो, एक रेशियो बनाएंगे purchase amount versus installment. Now here the rate of interest is 10%. 10% rate of interest का मतलब क्या होता है? That means that कि if the principal is 100 rupees, so on that 100 rupees you have to give the interest of 10 rupees. So that principal जो है वो बन जाएगा 110 rupees after 1 year. So 100 is to 110. इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट वर्सेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट ना लिखते हुए परचेज वर्सेस अमाउंट लिखते हैं. सो दिस रेशियो इज 100 is to 110. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रेशियो बन रहा है 10 is to 11. नाउ हर एक स्टेप आपको ये याद रखना है कि कैसे करोगे. देयर आर 2 इंस्टॉलमेंट्स. सो फर्स्ट ईयर का आई एम राइटिंग फर्स्ट ईयर 10 रुपीज का बन जाएगा 11 रुपीज. वाई? बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. नाउ सेकंड ईयर में आपको क्या करना है? आपको इस 10 का स्क्वायर ले लेना. 10 का स्क्वायर वर्सेस 11 का स्क्वायर. ठीक है, 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 121. इट मीन्स कि अगर आपका परचेज अमाउंट 100 है सो इंस्टॉलमेंट भी 121 रुपीज. बट वी नो दैट कि इंस्टॉलमेंट हर साल सेम होता है. तो यहाँ पर 10 का 11 था and here it is 100 is to 121. So here this is 11 rupees का installment and here it is 121 rupees का installment. But we know that कि installment हर साल same होता है. तो या तो इस 11 को हम 121 बनाए या फिर ये 121 को 11 बनाए. It is easy to make 11 to 121. तो हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर इसे 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हमें इसे भी 11 से मल्टीप्लाई करना है. So we will now get the new ratio. The new ratio is something like this. 10 into 11 is 110 and 11 into 11 is 121. This is the first year. ये first year है. And second year में 100 का बन गया 121. ठीक है, आप देख रहे हो. Now both this installment amount is 121 rupees. ठीक है, ये इसको हमने सेम कर दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे?
हम ये 110 प्लस 100 को ऐड करेंगे, सो दैट इज 210 वर्सेस, और इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इंस्टॉलमेंट है जो हमको इंडिविजुअली पे करना है, सो दिस इज 120। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है दैट इफ द परचेज अमाउंट, if the purchase amount is 210 rupees, then the installment amount would be 121। मतलब अगर आपने कोई 210 रुपीज का कोई प्रोडक्ट परचेज किया है और 2 साल का इंस्टॉलमेंट अगर आप पे कर रहे हो, then every installment would be of 121 rupees, but here the purchase amount is 21,000 rupees। ठीक है, this is not 210, this is 21,000, 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट में भी 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे, सो इंस्टॉलमेंट अमाउंट हैज बिकम 12100। ठीक है, वंस अगेन इस क्वेश्चन को करना कैसे, क्या क्या स्टेप्स है। पहली बात तो ये जो आरओआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे आप परचेज अमाउंट वर्सेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट का एक रेशियो बनाएंगे फ्रॉम दिस। इफ इट इज 2 years तो आपको स्क्वायर भी करना है, इफ इट इज 3 years तो आपको क्यूब तक जाना है। नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू ट्राई टू मेक दिस इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल। आपका हर इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू विल मल्टीप्लाई द रेशियो। उसके बाद ये जो परचेज अमाउंट है उसे ऐड करेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट को ऐड नहीं करोगे, एंड में आपको एक परचेज अमाउंट वर्सेस इंस्टॉलमेंट अमाउंट का रेशियो मिलेगा, एंड फ्रॉम दैट you will get your answer. Now here the installment amount is 3,600, ROI is 20%, yearly installment is 2, you need to find the purchase amount। तो पहले वाले क्वेश्चन में purchase amount दिया था, installment amount निकालना था। In this particular question, installment amount is given, you need to find the purchase amount। So once again, I will solve this question by two different methods. First, we will use the formula. So here, installment is 3600, so that formula I am applying. This is equal to A upon rate of interest is 20%, so 100 plus 20 will become 120। 2 साल की बात है, so it is square into rate of interest is 20 by 100। So amount को यहाँ रखते, बाकी सब चीजों को वहां लेके जाएंगे, so it is 3600 into, now this is in the denominator, so that we will put it in the numerator, so this is nothing but 1 minus 100 by 120 is 5 by 6 का स्क्वायर। ये 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 20 चला जाएगा, amount is 1 minus 5 by 6 का स्क्वायर is 1 minus 25 by 36। Now 36 minus 25 is 11, और इस 36 को नीचे भेज देते हैं, 36 so it is 5500। So if the installment amount is 3600, then the purchase amount is 5500, the rate of interest is 20%। ठीक है, now once again we'll solve this question using that purchase amount versus installment amount का trick। Now 20% का मतलब होता है that if the purchase amount is 100, then after 1 year you have to pay 120 rupees। It means 5 का बन गया 6। So this ratio I will write as 5:6। This is for the first year। There are 2 years, so second year के लिए हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। This ratio we will write। थर्ड स्टेप, इंस्टॉलमेंट अमाउंट शुड बी इक्वल, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द न्यू रेशियो इज 30:36 वर्सेस 25:6। इसके बाद हम 20, 30 एंड 25 को ऐड करेंगे, परचेज अमाउंट वर्सेस, so 25:36। what does this mean?
This means that if the purchase amount is 5,500, then the installment amount is 36. But here the installment amount is not 36, it is 3,600. It means that the purchase amount is 5,000. Next question. A sum of money is paid back in two annual installments of 17,640 each. So this is the installment amount. Allowing 5%, the sum borrowed is so R is 5%. Two annual installments. So there are two installments. Purchase amount versus installment amount. 5% rate of interest का मतलब है कि 100 का बन जाएगा 105. It means if I simplify, then 20 का बन जाएगा 21. This ratio is 20:21 for the first year. और second year 20 का square 400 and 21 का square 440. इसको भी 441 बनाने के लिए into 21. इसको करेंगे तो इसको भी into 21. So this ratio now will become 21 into 2 is 420. 420 का 441 and 400 का 4. Next is we have to add this to 420 plus 400, that is 820. It means that if the purchase amount is 820, then the installment amount is 441. But here the installment amount is 17640. क्या इसमें कोई relation दिख रहा है? Yes, this is 441 into 4 करेंगे तो 1764 हो जाता है. So this is 40 times. इसको भी into 40. So answer is 32,800. Option first is the correct answer. A man borrowed a sum of rupees 5,000 from a bank at 20% per annum. He pays back 2,000 at the end of each year. Calculate how much amount he will have to pay at the end of third year to clear all his dues. तो इसमें हम एक टेबल बना लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का. So he borrowed a sum of rupees 5,000. So here the principal is 5,000 rupees. Rate of interest is 20%. तो उसने 5,000 रुपीज दिए 20% पे, तो पूरे साल उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो एट द एंड ऑफ द ईयर द इंटरेस्ट इज नथिंग बट 20% ऑफ 5,000. 20% ऑफ 5,000 कैसे निकालते हैं? परसेंटेज को 2 जीरो से काट देंगे. सो इट इज 20 into 50, दैट इज इक्वल टू 1,000. It means that on this 5,000 rupees he has to pay the interest of rupees 1,000. So end of the year ये जो amount है ये बन जाएगा 5,000 plus 1,000, that is 6,000. But उसमें से he is paying 2,000 rupees. So 2,000 rupees pay कर देगा, तो amount left is nothing but 6,000 minus 2,000. So that is 4,000. It means at the end of the year उसका जो लोन का अमाउंट है वो 5,000 से कम होके 4,000 हो चुका है. This is the story of the first year. Now second year start होते ही the principal is now 4,000 rupees क्योंकि 2,000 is already been paid. 20% is the rate of interest. So interest which he has to pay is nothing but 20% of 4,000, which is equal to 800. So principal is 4,000. Interest which now he has to pay is 800. So the amount is 4,800. उसमें से उसे 2,000 रुपए पे कर दिए तो बचा 2,800. This is the outstanding amount. अभी थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका है. हमें क्या निकालना है? हाउ मच अमाउंट ही विल हैव टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. और थर्ड ईयर के एंड पे पहुंच जाते हैं. प्रिंसिपल इज 2,800. 20%. 20% of 2,800 कितना हो जाएगा? इट इज 20 into 28, दैट इज इक्वल टू 560 rupees. So 2,800 plus 560 is 60 and 28 plus 5 is 33. So at the end of the year, the amount is 3,360. Okay, so the end of the third year, how much he has to pay? So he has to pay 3,360 rupees to clear all his
use. So with this we are through with the topic. इंस्टॉलमेंट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ सिस्टमेटिक कुछ ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के जनरली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं. And if you like my way of teaching, then please subscribe to my channel and keep on practicing math, because math is